भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत-सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। दुर्लभमानशो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरै तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठ-प्रियदर्शिनाम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराधयो भगवान् व्रजेश तनयस् तद्धाम वृंदावनम। रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्-भागवतं प्रमाणममलं प्रेमः पुमार्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादराना परः। हरे कृष्णा, dear worshipable devotees, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण और पाठन। आज हम पढ़ेंगे, we will read Canto 10, Chapter 6, Chapter 8, sorry. Lord Krishna shows the universal form. तो हमने text 6 तक पढ़ लिया, we have read till text 6. Garga Muni is the spiritual master of Nanda Maharaj, and he has come. Garga Muni Mathura आए हैं, sorry, Vrindavan आए हैं, Gokul में आए हैं, and he is doing the Namekaran ceremony. Nanda Maharaj is requesting him to give the names and to check the horoscope and to perform the reformatory activities, basically to get the blessings. So भगवान कृष्णा और बलराम जी को गर्ग मुनि का आशीर्वाद प्राप्त हो, ये नंद महाराज चाहते हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो ये संस्कार करें. Sanskar has a deep meaning in our lives, and there are multiple sanskaras at multiple junctures of life, like Vivah Sanskar, Garbhadhan Sanskar, Antyeshti Sanskar, etc. But for now, we will move on to text number 7, text Shlok Sankhya 7. Shri Garga Uvacha Yadunam Aham Acharya Khyatascha Bhuvi Sarvada Sutam Maya Samskritam Te Manyate Devaki Sutam. Translation and purport by His Divine Grace Abhicharan Arvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Garga Muni said, "My dear Nanda Maharaj, I am the priestly guide of the Yadu dynasty. This is known everywhere. Therefore, if I perform the purificatory process for your sons, Kamsa will consider them the sons of Devaki." Purport: Garga Muni indirectly disclosed that Krishna was the son of Devaki, not of Yashoda. Since Kamsa was already searching for Krishna, if the purificatory process was undertaken by Garga Muni, Kamsa might be informed, and that would create a catastrophe. It may be argued that although Garga Muni was the priest of Yadu dynasty, Nanda Maharaj also belonged to that dynasty. Nanda Maharaj, however, was not acting as a Kshatriya. Therefore, Garga Muni said, "If I act as your priest, this will confirm that Krishna is the son of Devaki." Ram. Hare Krishna. It's a very nice verse and purport here. तो इसमें गर्ग मुनि बोल रहे हैं कि हे नंद महाराज, अगर मैंने संस्कार किया
तो कंस को पता चल जाएगा कि भाई यदु कुल का आचार्य, यदु कुल का कुल गुरु है गर्ग मुनि, और यदु कुल के कुल गुरु ने किया तो कंस को खबर पहुंच जाएगी और वो पता कर लेगा कि देवकी के पुत्र यहाँ छिपा हुआ है, मेरा काल यहाँ छिपा हुआ है नंद के घर पर, और वो अपने मंत्री भेजेगा, अपने सैनिक भेजेगा और कृष्ण को खत्म करने का प्रयास करेगा, उनको हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा. He will try to cause inconvenience for the Supreme Lord, knowing the fact that Garga Muni is the Acharya for the Yadu Vamsha. And now the question may come that, okay, then Nanda Maharaj is also in Yadu Vamsha, then it's fine. But Prabhupada is mentioning Nanda Maharaj was not acting as a Kshatriya. So they were both the descendants of Yadu, but Vasudev was acting as a Kshatriya and Nanda was acting like a Vaishya. Their main occupation was Goraksha, Krishi. तो नंद महाराज और यदु के जो दोनों, ये नंद महाराज और वसुदेव दोनों नंद यदु कुल के ही है, लेकिन वसुदेव क्षत्रिय थे और नंद महाराज हमारे वैश्य, तो इसलिए उनको हिंट दिया गर्ग मुनि ने कि तुम ऐसा मत कराओ, इन शॉर्ट कि मुझे संस्कार करने के लिए मत बोलो. कंस को खबर पहुंच जाएगी. तो यहाँ पे ये एसेंस मिलता है कि हर कोई देखिए कृष्णा के भले के लिए सोच रहे हैं. वो क्यों नहीं करना चाहते? ताकि कृष्णा को हानि ना हो, क्योंकि अगर वो करेंगे तो कंस को खबर पहुंचेगी और कंस अपने सैनिक भेजेगा. So if he would have done the samskara, or his intent was that Krishna remains safe, that should be our whole purpose, that we are Krishna conscious devotees. When we are in ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, we should always be conscious that how Krishna is in the center, how Guru is in the center, how the service of the Supreme Lord is in the center. That's Krishna consciousness. Always thinking about Satam Smartavya Vishnu Vismartavya Na Jatuchit Sarve Vidhi Nishirasyo Etayor Eva Kinkar. Always remember Krishna, never forget Krishna. Gargamuni is showing that. In this whole episode, he's remembering भगवान को याद कर रहे हैं कि क्या भगवान कृष्ण के लिए सबसे उचित है, वही होना चाहिए. देखते हैं आगे क्या होता है. Let's read text 8, 9. Anyone wants to read? Nityaṁ Mata ji has also joined. धन्यवाद माता जी आपका. पढ़ना चाहिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. नहीं प्रभु जी, मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए. मेरा सुनने का बहुत इच्छा थी कि मैं सुनूं, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया प्रभु जी. चलिए आप सुनिए और विपुल प्रभु पढ़ सकते हैं. Hare Krishna devotees, Dhamma Pranam, all blessings Śrīla Prabhupada. Text 8 and 9. Kamsa papo moti shakham tavo chanako dundubhe devoka astamo garbo nastri bhavitam arhati iti santintan sanchayan Chubha Devoka Dariko Bacho Ohitam no Anno Bhavat. Translation purport by his divine guest A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada Śrīla Prabhupada ki Jai. Translation. Kamsa is both a great diplomat and very sinful man. Therefore, having heard from Jogamaya, the daughter of Devaki, that the child who will kill him has already been born somewhere else, having heard that the 8 pregnancies of Devaki could not bring forth a female child, and having understood your friendship with Vasudev, Kamsa, upon hearing that the purification process has been performed by me, the priest of the Yadu dynasty, may certainly consider all these points and suspect that Krishna is a son of Devaki and Vasudev. Then he might take steps to kill Krishna. That would be a catastrophe. Purport.
Kamsa knew very well that Yogamaya was, after all, the maid servant of Vishnu, and that although Yogamaya had appeared as a daughter of Devaki, she might have been forbidden to disclose this fact. Actually, this was what happened. Gargamuni argued very soberly that his taking part in performing the reformatory process for Krishna would give rise to many doubts, so that Kamsa might take very serious steps to kill the child. Kamsa had already sent many demons to attempt to kill this child, but none of them had survived. If Gargamuni were to perform the purification process, Kamsa's suspicions would be very fully confirmed, and he would take very severe steps, and Gargamuni gave this warning to Nanda Maharaj. So definitely, being a king, he's a very diplomat, and not only that, very sinful, because he already put behind the bars his father to enjoy the property and the kingdom, and as he's a diplomat, he can always thinking to find the Krishna, and giving all these points relationship, and if the Gargamuni takes the priesthood for the purification process of this child, so Kamsa may suspect that this is the Krishna of the son of Devaki. Then he might intensify his all ill actions further. But it is nothing for Krishna, just a fun activities. But Gargamuni, being the priest of he wants all the good things for the family and all people, all the members of the Jodhu dynasty. So that's why he did not want to take part of this purificatory process. Back to Prabhuji. Hare Krishna. प्रभुजी ने इंग्लिश में बहुत अच्छे से बताया. यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो हमने लास्ट परपोर्ट में भी तात्पर्य में चर्चा करी, बिल्कुल सेम वही श्लोक अनुवाद में है. तो 3 कारण दिए हैं गर्गमुनि ने कि कैसे कंस को ज्ञात हो सकता है कि उसके जो काल है ये गोकुल में होगा. तो पहला कारण बताया गया कि योग माया ने बोल दिया था. योग माया ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि कंस तुम्हारा काल, जो देवकी का जो संतान है वो ऑलरेडी कहीं और जन्म ले चुकी है. क्योंकि याद है हमने शुरुआत में पढ़ा था कि वो जो डॉटर थी उसके हाथ से स्लिप हो गई थी, और वो योग माया के रूप में उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि जो ऑलरेडी कहीं और जन्म ले चुकी. तो दूसरा कारण क्या दिया? साख्य, साख्यम अनक दुंदुभिः, कि तुम्हारी ऑलरेडी फ्रेंडशिप बहुत क्लोज है. वसुदेव और नंद महाराज की फ्रेंडशिप है, क्योंकि बहुत सेम कुल से भी हैं और बहुत उनकी निकट मतलब उनका संबंध है. तो अब ये दोनों कारण तो चेंज हो नहीं सकते, नहीं. तो अब बोलते हैं ना कि ऑलरेडी जब चीज अगर लाइक पार्शली, तो ऑलरेडी उसको शक हो रहा होगा इन दोनों कारण से. नाउ Prabhupada is writing, Kamsa's suspicion will get confirmed if he would take if he would do this ceremony, if he would do this purificatory. Kams का जो डाउट है वो उस पे मतलब एक और लेयर चढ़ जाएगी कि अरे देखो गर्ग मुनि ने संस्कार किया, अब तो पक्का वहीं पे ही है मेरा काल. तो एटलीस्ट जो थर्ड कारण है वो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये संस्कार करूंगा तो कंस का जो डाउट है वो एकदम रियलिटी में बदल जाएगा. तो बेटर I should avoid this. Again, what's the main reason? कि भगवान पे कोई आपत्ति ना आवे, भगवान पे कोई आपत्ति, कोई संकट ना आए, कैटास्ट्रोफी भगवान पे ना आए. To avoid this catastrophe, that would be catastrophe. तो this should be our heart कि भाई
मतलब गुरुजनों पे कोई आंच ना आए, भगवान पे कोई आंच ना आए, भगवान को प्रोटेक्ट करने के लिए, गुरु को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैष्णव धर्म को, सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सब कुछ चिंतन मनन करना चाहिए, जैसे कि गर्ग मुनि यहाँ पे ये श्लोक बोल रहे हैं। किसी के और कुछ टीका टिप्पणी, एनी कमेंट्स, थॉट्स, रिफ्लेक्शंस इन दिस टू टेक्स्ट व्हिच वी जस्ट रेड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां, बासवती माता जी, you want to read? Hare Krishna Prabhuji, Dhanavad Pranam. All glories to Srila Prabhupada. Text 10. Shri Narad Nanda Ubacha Alokshi Tasmin Rahasi Mamakair Api Govraje Kuru Dijari Samskaram Shwashti Bachana Purvakam. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Nanda Maharaja said, "My dear great sage, if you think that your performing this process of purification will make Kamsa suspicious, then secretly chant the Vedic hymns and perform the purifying process of second birth here in the cow shed of my house. Without the knowledge of anyone else, even my relatives, for this process of purification is essential." Nanda Maharaja did not like the idea of avoiding the purificatory process. Despite the many obstacles, he wanted to take advantage of Garga Muni's presence and do what was needed. The purificatory process is essential specifically for Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas. Therefore, since Nanda Maharaja presented himself as a Vaishya, this process of purification was essential. Formerly, such institutional activities were compulsory. Chaturbanyam maya srishtam guna karma vivagashaha. Bhagavad Gita 4.13. Without these activities of purification, the society would be considered a society of animals. To take advantage of Garga Muni's presence, Nanda Maharaja wanted to perform the Namkaran ceremonies even secretly without any gorgeous arrangements. Therefore, the opportunity for purification should be regarded as the essential duty of human society. In Kali Yuga, however, people have forgotten the essence. Mandaha Sumanda Matayo Manda Vagyahi Upadhrutaha. Srimad-Bhāgavatam 1.1.10. In this age, people are all bad and unfortunate, and they do not accept Vedic instructions to make their life successful. Nanda Maharaja, however, did not want to neglect anything. To keep intact a happy society advanced in spiritual knowledge, he took full advantage of Garga Muni's presence to do what was necessary. How degraded society has become within 5,000 years. Mandaha Sumanda Matayo Manda Bhagaya. The human life is obtained after many, many millions of births, and it is intended for purification. Previously, a father was eager to give all kinds of help to elevate his children, but at present, because of being misguided, people are prepared even to kill to avoid the responsibility of raising children. So here, Nanda Maharaja is very particular, and he wants to take the full advantage of his guru, his spiritual master, Garga Muni, and in presence of him, he wants to do all the process of purification, therefore, so that's why he wanted to chant all the hymns and also do all the processes of Namkarana ceremonies. So that is a pure devotee, as well as father here. Nanda Maharaj do not want to live
like any he doesn't want to do anything which may cause like Krishna, like which may cause Krishna not to be pure or something. That's his in his mind. So that's why he wanted to do. And also here in the purport, Prabhupada mentioned that now, like even the children when they're in mother's womb, they to take the responsibility or doing something bad karmas. That's why they want to kill the children in their womb. So it happens in the present world. But in the Vedic Yug and the Vedic era, actually it was totally different, as described details by the Nanda Maharaj, interaction between Nanda Maharaj and his spiritual master Garga Muni. Back to you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Baswati Mataji. I'll just repeat what you said in Hindi, so my mother, who's also hearing, can understand this beautiful nectar. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गर्ग आचार्य ने साथ पूरा क्लियरली बोल दिया, भाई मत करो ये सेरेमनी, मत करो, और कारण भी बताए क्यों मत करो. तो ये बहुत अच्छा लेसन है कि हम कुछ भी कार्य करें या ना करें, कारण बताने से स्पष्टता होती है, communication clear hota hai when we explain the whys behind that. So it's always a good idea when we say, okay, I cannot come for the program, when we explain the why, or can we do this, let's try to explain the why also, so that we can make it easier for the other person to understand our situation. It really helps in better communication to explain the why. तो हमें कारण भी बताने चाहिए, जैसे उन्होंने क्लियरली स्पष्ट किया उनको कि इन कारणों की वजह से आप ये संस्कार मत करो भाई, कृष्ण के भले के लिए मत करो. अब एक तरीके से हम सोच सकते हैं कि गुरु बोल रहे हैं मत करो, लेकिन शिष्य बोल रहा है कि तो क्या गुरु अवज्ञा हो गई? इज लाइक डिसरिस्पेक्ट टू गुरु. नंद महाराज कह रहे हमें हार्ट समझना है, हार्ट, टू अंडरस्टैंड द हार्ट. कि माय डियर सेज, कि अब सोचिए कि नंद महाराज के घर जो पहले संस्कार हुए, नंद उत्सव, और फिर बाद में जो माताओं वाला उत्सव था, अनेकों उत्सव हुए. उत्सव मीन्स फेस्टिवल, फेस्टिवल मीन्स ग्रैंड, एंड स्पेशली नंद महाराज हु वाज लाइक द किंग ऑफ व्रज, व्रजेंद्र नंदन. व्रज के इंद्र थे बेसिकली, व्रजेंद्र नंदन इज कृष्णा. So he was like a very powerful man, was very, very influential, rich, opulent, millions of cows, उन तो लाखों करोड़ों तो काव गाय थी उनके घर पे. तो उन्होंने कहा कि ओके, हम ये सेरेमनी करेंगे लेकिन सीक्रेटली करेंगे, काउ शेड में, गौशाला में करेंगे. ये सेकेंड बर्थ, ये जो द प्यूरिफाइंग प्रोसेस फॉर सेकेंड बर्थ, ये जो संस्कारात भवेद द्विज, द्विज मीन्स सेकेंड, द्विज, द्वि मीन्स टू, ज मीन्स जन्म. तो दूसरा जन्म होता है जब गुरु के द्वारा संस्कार होते हैं. द फर्स्ट बर्थ इज जो माता देती है गर्भ से, आवर बायोलॉजिकल मदर. लेकिन वो तो जानवरों का भी होता है, वो तो जानवरों का भी होता है, लेकिन संस्कार से ही असली शुद्धिकरण होता है. तो नंद महाराज इसकी वैल्यू समझ रहे थे, इंपॉर्टेंस समझे, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ठीक है, हम ये छोटा सेरेमनी, वेरी वेरी क्लोज पीपल, विदाउट द नॉलेज ऑफ एनीवन एल्स, किसी को नहीं बुलाएंगे, नॉट बिकॉज वी डोंट वांट टू इनवाइट देम, उनको ताकि किसी और को ये खबर ज्यादा फैले ना कि नंद महाराज के घर गर्ग मुनि ने ये बहुत बड़ा संस्कार किया, तुरंत कम्स तक खबर पहुंच जाती. लेकिन ये कहाँ पे किया? गौशाला में. सजेस्ट किया उन्होंने, अभी हुआ नहीं है, गौशाला में कर लो. तो इससे एक और शिक्षा मिलती है, टाइम, प्लेस, सिचुएशन, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से कार्य करना चाहिए.
देश काल और परिस्थिति, क्योंकि परिस्थिति इस बार ऐसी थी कि वो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई अज्ञात, बाकियों को ज्ञात ना हो इस बात का, बट इट्स लाइक कि संस्कार भी हो जाए, बट नो लाइक अचिंत्य, अज्ञात रूप से हो जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, तो वी कैन नॉट जस्ट स्किप द प्रोसेस कि उसको बट अज्ञात रूप में कर लिया जाए। और प्रभुपाद जी लास्ट में बता रहे हैं कि आजकल कलयुग में कितनी दुर्दशा हो गई है। अभी अमेरिका में कुछ ऐसा बिल पास हो रहा है या चल रहा है या हो गया, मुझे मालूम नहीं, आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन मैं पढ़ रहा था कहीं, तो किसी ने भेजा, तो यहाँ कुछ पैसा पास चल रहा है कि अबॉर्शन एट अ सर्टेन स्टेज या लाइक 4 वीक्स 8 वीक्स या उसके बाद नहीं करा सकते। तो लोग बोल रहे हैं भाई हम तो आजाद देश के रहते वाले निवासी हैं, हमें क्यों आप ये हमें क्यों कह रहे हो कि हमें क्या करना नहीं करना, हमें जो अच्छा लगेगा करेंगे। लाइक नॉनसेंस। हम जब चाहे अबॉर्शन करा सकते हैं। यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पीपल आर प्रिपेयर्ड इवन टू किल टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन। दैट्स अबॉर्शन बेसिकली, राइट। और लोग ऐसे लाखों मिलियंस ऑफ केसेस एवरी ईयर आर हैपनिंग, and if the government and the leaders try to do something, then people just oppose. People oppose when they asked to put a mask in the beginning, right? When this COVID and all started, people said you have to put mask, and then why should you put mask? We are residents of free world. So all that's going on. Any other comments? Any thoughts? So today Her Grace Nandini Kishori Mataji is there, so let's welcome her by chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. हरि बोल माता जी। We are very fortunate to have your association after a really long time. So I hope you and your family are all doing well. I'm so fortunate to have your association, Prabhus, all of you. Thank you. Mataji, are you in a position to read? Yes, Prabhu. Ji, please, Mataji. Dhanavad to your mother. Shri Shuka Uvacha Evam Sampartito Vipra Swachiki Kirshitamev Tat Chakara Namakaranam Gudo Rahasi Balayo. Purport translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Sukadeva Goswami continued, having thus been especially requested by Nanda Maharaj to do that which he already desired to do, Gargamuni performed the name-giving ceremony for Krishna and Balaram in a solitary place. So, great minds think alike. So that this way, it's saying that Nanda Maharaj and Gargamuni had both wanted to do this, and they continued. And when it comes to welfare of Krishna, all the devotees always, for our bhakti, in this case, it's for welfare of Krishna, even we can use those words. But great devotees are always thinking of Krishna, Tushyanti cha Ramanti cha. And Krishna is always thinking of them, Madgata Prana. So these devotees are always thinking of Krishna, and they are thinking what is best for their child, which is Krishna here, and they want to do what is according to norm, what is according to their own heart's desire, and what would be most pleasing to Krishna. Back to you, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. तो नंद महाराज ने ये प्रस्ताव रखा कि रादर देन ये कैंसल करने की बजाय इस पूरा शुद्धिकरण के संस्कार को, नामकरण संस्कार को कैंसल मत करो, इसको प्राइवेट में कर लो, सॉलिटरी प्लेस में,
एकांत स्थान में किया जाए। और शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं यहाँ पर कि गर्ग मुनि इस प्रस्ताव से खुश हुए। उन्होंने वहां पे कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार एकांत स्थान गौशाला में किया। देखते हैं उन्होंने क्या नाम दिए भगवान कृष्ण और बलराम जी को। 12वें श्लोक में कोई पढ़ेंगे? कशिश माता जी want to read? और anyone? नीता माता जी? ठीक है, मैं ही पढ़ देता हूँ। कोई I'm sorry, Hare Krishna Prabhuji. Actually, I'm in the kitchen. Please कोई forgive बात me. नहीं, कोई बात नहीं। आप सुन रहे हैं, यही हमारा बहुत सौभाग्य है। श्री गर्ग उवाच अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आक्ष्यासते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः यदूनाम् अपृथक् भावात् sankarshanam ush-anti api. Translation and purport by Abhicharana Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Garga Muni said, this child, the son of Rohini, will give all happiness to his relatives and friends by his transcendental qualities. Therefore, he will be known as Rama. Shri Ram Balaram Ji Ki Jai. And because he will manifest extraordinary bodily strength, he will be known as Bala. Moreover, because he unites the two families, Vasudev's family and the family of Nanda Maharaj, he will be known as Sankarshana. Purport: Baladev was actually the son of Devaki, but he was transferred from Devaki's womb to that of Rohini. This fact was not disclosed. According to a statement in the Hari Vamsha, Pratyuvacha tato Rama sarvam stan abhitashthitam yadavishva api sarveshu bhavanto mama vallabha. Garga Muni did disclose to Nanda Maharaj that Balaram would be known as Sankarshana because of uniting two families, the Yadu Vamsha, the Vamsha of Nanda Maharaj, one of which was known as Kshatriya and the other as Vaishya. Both families had the same original forefather, the only difference being that Nanda Maharaj was born of a Vaishya wife, whereas Vasudev was born of a Kshatriya wife. Later, Nanda Maharaj was married a Vaishya wife and Vasudev married a Kshatriya wife. So although the families of Nanda Maharaj and Vasudev both came from the same father, they were divided as Kshatriya and Vaishya. Now Balaram united them. Hari Bol. And therefore, he was known as Sankarshana. So beautiful. Shri Balaram Ji Ki Jai. Shri Dao Ji Ki Jai. So यहाँ बलराम जी का नामकरण हो रहा है। 3 नाम दिए, गर्गाचार्य ने 3 नाम दिए। किसको? रोहिणी पुत्र को। रोहिणी पुत्र यहाँ कौन है? बलराम जी। तो पहला नाम क्या दिया? राम। Ram, Shri Ram, the source of all pleasure, the source of all transcendental qualities, the source of all happiness, one who gives happiness to everyone. Manobhiram. So many names are connected to Ram. Ram means the one who gives happiness. And that's Lord Balaram. He gives happiness. भक्त को सुख देते हैं, खुशी देते हैं। दुनिया में सब दुख से भरे पड़े हैं। पदम पदम यद विपदम, विपत्ति ही सब जगह है। तो भगवान श्री बलराम जी का आश्रय लेंगे तो हम
सुखी होंगे राम का आश्रय लेके। बिकॉज जब तक हम इंद्रियों के सुख से सुख प्राप्त करना चाहेंगे तो असली सुख कहां से आएगा? क्योंकि इंद्रियों का सुख तो बोला गया भगवत गीता में, यही संस्पर्श जाब होकर दुख एवते, वो तो दुख का सोर्स है, उससे असली सुख नहीं आएगा। असली सुख आएगा, असली हैप्पीनेस आएगी श्री राम बलराम से कनेक्ट होने से। दैट्स द फर्स्ट नेम राम। दूसरा नाम दिया बल। बल अर्थात स्ट्रेंथ। उनको बहुत शक्ति थी। अब आचार्यगण बताते हैं कि कैसी शक्ति। बलराम जी रिप्रेजेंट करते हैं गुरु तत्व ऑल्सो, इज द आदि गुरु। So बलराम जी गिव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति देते हैं हमें। हमें बलराम जी से प्रे करना चाहिए कि हमें आध्यात्मिक शक्ति मिले, जिससे हम भक्ति कर सकें, जिससे हम गलत दिशा पे ना जाएं और सही दिशा को चुनें, जिससे हम अपनी वचनों को, जो हमने वचन लिए हैं, vows of chanting, reading, hearing, following four regulative principles, 4 नियमों को पालन करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, भजन करना, इसको अच्छे से कर सकें। ये सारे शक्ति बलराम जी प्रदान करते हैं, गुरु तत्व। साथ ही साथ तीसरा नाम दिया। तीसरा नाम क्यों दिया? संकर्षण। तो यहाँ प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि उनके यदुकुल, अभी पिछले श्लोक में भी हमने यही चर्चा करी कि वसुदेव और नंद महाराज के जो पूर्वज थे वो सेम थे। वसुदेव का विवाह हुआ, जो पूर्वज उनके फोर फादर, उसका नाम तो नहीं दिया, लेकिन यदु, शायद यदु ही थे। तो यदु के जो क्षत्रिय वाइफ से, तो क्षत्रिय वाइफ से हुए वसुदेव, और वसुदेव की आगे विवाह हुआ क्षत्रिय वाइफ से, यानी कि देवकी। और नंद महाराज हुए जो एक और उनके पूर्वज की जो लाइक को वाइफ थी दूसरी, वो थी वैश्य परिवार से। तो उनका जो, उनमें वैश्य की गुण आए और उनका विवाह आगे हुआ माता यशोदा से, और आगे उनका फिर वो वैश्य कुल चलने लगा। तो एक ब्रांच से वैश्य कुल, एक ब्रांच से क्षत्रिय कुल, दोनों को जोड़ा संकर्षण ने, बलराम जी ने। तो इसलिए उनका नाम संकर्षण। संकर्षण मीन्स आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण, अट्रैक्ट, जो जोड़ना। तो and he's very attractive too. हमें भी अपनी तरफ आकर्षण करते हैं। हमारा हृदय अगर कोमल होगा, अगर इस जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो उस जंग को हटाना है चेतुदर्पणम मार्जनम चैंटिंग के माध्यम से, तो हमारा हृदय भी भगवान की तरफ आकर्षित होगा। क्योंकि भगवान तो कितने सोर्स ऑफ ऑल प्लेजर, सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस, बट फिर भी हमारा, आज ही हम सुन रहे थे, बोलते हैं लोग हमें रोना नहीं आता। आज एक बहुत सीनियर डिवोटी बता रहे, भगवान के लिए रोना नहीं आता। कोई है जिसको बहुत रोना आता है भगवान के लिए? बहुत रोना होता है। इतना आसान नहीं है ना, आर्टिफिशियली शायद आ भी जाए बट नेचुरली नहीं आता। तो वो बता रहे थे कि मान लो किसी ने बहुत मेहनत से 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, $1 मिलियन इकट्ठा किया, वट एवर, या 1 लाख रुपया, वट एवर, किसी के लिए लाख बहुत बड़ा है, किसी के लिए 1 करोड़ भी छोटा है। तो एनीवेज, जिसने बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा किया या कुछ बनाया, या वो समझ लो वो लॉस हो जाए, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का, तो क्या लगता है उसको रोना आएगा? या उसकी जॉब बहुत एकम्प्लिश जॉब और चली जाए, राइट? या उसके कोई परिवार में बहुत उससे निकट हो, या उसको somehow वो तो उसको रोना आएगा क्या? क्या कहते हैं आप लोग? When they cry, anyone? Any thoughts? They'll cry. Naturally, they'll cry. है ना? You all agree? रिएक्शन के बटन भी होते हैं, उसमें भी आप Yes, एंगेज Prabhuji. कर सकते हैं।
उनको बहुत रोना है। क्यों? उनसे लगाव है, उनसे अटैचमेंट है, उस चीज से या उस व्यक्ति से या उस पोजेशन से, व्हाटएवर, प्रेम है उससे, बेसिकली प्रेम है। तो भगवान हमारे पास नहीं है और भगवान हमसे अभी दूर हैं और हमें उनके लिए रोना नहीं आ रहा, अर्थात उनके लिए प्रेम नहीं है। सही बात नहीं है? जी प्रभु जी, सही बात है। अगर अटैच होंगे तो रोना आता है। मनन कर सकते हैं इस पे, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे। कि जॉब चला जाएगा अभी तो कितना दुखी होंगे, हाय 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 मेरा जॉब चला गया, हाय भगवान मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, क्या मैंने पाप किया था, या कुछ और, कुछ हेल्थ का नुकसान हो जाएगा तब बहुत रोना आएगा, या कुछ लेकिन भगवान हमसे दूर है और रोना नहीं आ रहा, तो ये भी हमें मनन करना चाहिए। और किसी का कुछ टीका टिप्पणी कुछ बोलना चाहते हैं कोई? Hare Krishna Prabhuji. हम्म। Also, just would like to clarify here Kshatriya and Vaishya. So, Nanda Maharaj ने बलराम को पालन किया, so इसलिए वो उसका पिता है, but it's not direct पिता. Whereas Vasudeva जी उसको देवकी माता के उनसे, एक्चुअली रोहिणी माता के उनसे बलराम born हुआ, तो इसलिए both Vaishya and Kshatriya together means in terms of varnashram dharma. So Vaishya and Vaishya and Kshatriya, they mixed it, and that's why they say sankarshan. So here, Prabhuji, I just would like to understand, like Sanatan Dharma always like in 4 categories, and that time Vedic era, in that time Garga Muni mixed both Kshatriya and Vaishya and Balaram, because his original father was Vasudeva, but Nanda Maharaj ne usko pala. Foster father, yeah, Foster he raised. father. हाँ. ऐसा नहीं गर्गाचार्य ने दोनों कुल को मिक्स कर दिया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। It's like he united the 2 families. Let's put it simple. He became the cause to unite the 2 families. And the other reason also, which I have heard in another like Balarām Purnima class, by the pull, he was attracted by the pull, by the energy. He was magically attracted from Devaki's womb to Rohini's womb. Sankarshan, one of the other reasons. And another reason, he attracts us towards him. Sankarshan. Krishna also, all attractive. This Sankarshan, I mean, Krishna is in that word itself, right? One who attracts everyone, he's all attractive, is Krishna. जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं. And so, of course, we see Krishna Balaram deities, they attract us with their pastimes, with their names, with their qualities. So, any other thoughts, comments, additions, questions? Anyone has? So we'll meditate upon the names of Balaram, and tomorrow we'll cover Krishna's names. So today we discussed कि भाई कि जो संस्कार है पहले मना किया गर्ग मुनि ने, ये कैंसिल कर दो, but Nanda Maharaj understood the heart. Next verse में पता चलता है कि Garga Muni also wanted to do in a solitary place. So as Mataji said, a very nice point, great souls think alike, think for the welfare of Krishna. And then finally he gave name to Balaram. Yes, Nandini Mataji, you want to say something? No, very noticeable fact is that even our Rath Yatras and festivals,
There's always calamities coming. Sometimes there's rain, too much rain is going to cancel. Other times a hurricane is coming or whatever. It's Krishna always puts us in anxiety and then we have to decide. Same thing here. There's a impending danger of Kamsa recognizing what's happening or who is baby Krishna. So they have to do this secretly. So there's always this anxiety Krishna gives to keep us balanced. Like a proper balance is one is to serve him, and other is to also not lose the opportunity to serve him. So we have to always, it's nice that Krishna keeps us on the edge. Back to you, Prabhu. Hare Bol. Thank you. Thank you so much. It's always like a backup plan. Backup plan. Very nice. So we'll keep a pause here and continue tomorrow with the next verse, where Krishna's name. But for today, we can meditate upon this time, place, situation, and the three names of Balaram. Shri Balaram ji ki jai, Shri Rohinandan ki jai, Shri Sankarshan ki jai, Grantraj Bhāgavatam Puran ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Samaveta Gaur Bhaktavinda ki jai, Vancha Kalpatarubhyascha Kripasindhubhyo Vajapatitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.